Farmer. Farmer has produced some crop. Industry has converted it into a product, and chemist has given a service. So all the three sectors are giving some contribution, and what contribution they are giving is also mentioned here. This is also 600. This is also 600. But which method is better? This 600 is known as GDP because this is final value. This 600 is known as GVA because this shows value addition. Both are equal. You can follow that method or this method. कोई भी method follow कर लो. It's not a problem. But this gives you the breakup of the figure of 600. Breakup समझते हैं? इस उम्र में मतलब कुछ और ही हो सकता है. तो मैं कुछ और वर्ड यूज कर लेता हूँ. डिटेल. कहीं बेचारा को रो पड़ा तो. Why to take chance? I'm taking all the method. क्यों खरीदेगा? वो गधा थोड़ी है. बेटा वो अपना ही उसके पास वो है तो. बट पॉइंट वो नहीं है ना. पॉइंट ये है हमने जीडीपी कैसे निकालना है. पॉइंट अगले थोड़ी है. बड़ी चीज पे ध्यान दो ना. आप कहाँ मेडिकल साइंस में जा रही हो. राइट. देखिए सुनिए. ए का मतलब है अक्षय कुमार जो सुबह मॉर्निंग वॉक करता है. बी का मतलब है बाबा रामदेव. सी का मतलब है केमिस्ट. और डी का मतलब है डोंकी. उसका कस्टमर. तो इनकी बात सही है कि क्या ये डोंकी यही हो सकता है क्या जिसके खेत से आपने थोड़ा सा एलोवेरा रखा उसी को उसी का जेल 600 रुपए का बेच दिया तो वो डोंकी रहेगा ना फिर तो. क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि एलोवेरा का जेल है तो एलोवेरा तो लगा हुआ है. बिकॉज मैंने बोला कैक्टस तो नोबडी नोज द यूटिलिटी ऑफ कैक्टस. इसलिए बॉटनी पढ़ा होना चाहिए. तो यूपीएससी प्रिपरेशन मेक्स यू ऑलराउंडर. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ यू आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट कम कॉमर्स स्टूडेंट कम साइंस स्टूडेंट. अदरवाइज यू आर जातिवाद. नाउ देयर इज नो जाति. कोई साइंस का नहीं है कोई कॉमर्स का नहीं. सब यूपीएससी पे जाती नहीं है ना. सेक्युलरिज्म भैया नहीं. अब इसमें छोटे छोटे आइडियाज को मत देखो. आप किसको एक्ने हो गया क्या हो. आप सीधा पकड़ो बड़ा एस्पेक्ट. नेशनल लेवल पे जीडीपी क्या होता है. जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू. दिस इज इंटरमीडिएट गुड. दिस इज इंटरमीडिएट गुड. दिस इज फाइनल गुड्स. Ultimately, the processing of everybody landed up in making a bottle, which was sold with service to a patient who purchased that bottle as if medicine है. Did you understand? Its initial value can be 0, but now it is a medicine. वो 600 गया 6000 क्या उसका वैक्सीन 1200 की बेची. 12 रुपए की कॉस्ट आ रही है कंपनी को. क्या फर्क पड़ता है. ठीक है. तो जीडीपी एंड जीबीए आई एम सेइंग कि कौन सा बेटर है. तो यू हैव टू से दिस इज बेटर. व्हाई दिस इज बेटर? बिकॉज़ दिस इज मोर डिटेल्ड. व्हाई दिस इज बेटर? बिकॉज़ दिस इज इंटरनेशनली फॉलोड. दिस इज एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस. So we are also following it. Earlier we were following this method. Now we are following this method. Although we land up with the same value. ठीक है. तो जीडीपी अल्टीमेट. Are you getting me? One more. पहले ये लिखो. एग्जांपल बोला ना आपने वहां पे. ये टेबल बना लो पहले. मेक दिस टेबल एंड आस्क क्वेश्चंस. यस.
या तो नेगेटिव क्यों सोचता है हमेशा? हाउ इट कैन बी नेगेटिव? जब लॉस होगा, बता तो रहा हूँ, व्हेन योर आउटपुट वैल्यू इज लेस एंड योर इनपुट वैल्यू इज मोर, इट कैन बी नेगेटिव, बट इट विल बी ओनली फॉर 1 or 2 people, not for the whole country. At macro level can it be negative? पूरी कंट्री के लिए जीडीपी नेगेटिव हो सकता है, और 1 or 2 प्रोड्यूसर इट कैन, लाइक फॉर अ फार्मर इट कैन बी, टमाटर की कॉस्ट आ रही है 20 रुपए, मार्केट में बिक रहा है 10 रुपए, हो सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस इन द टू? इट कैन बी नेगेटिव. GDP and no difference, both are 600, only method is different. You are most curious, all of us, you're taking guarantee of all these efforts. नहीं, we have to बोला नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ. Who's not asking question? You तो you're asking. Suffer and dumb people means who have questions they don't ask. See, if you're spending so much money, so much time, you should ask. And why you're laughing at questions? If somebody is asking questions, then somebody who's not asking is a refer, not the person who's asking is a refer. Who's asking is inquisitive. She's right. You have all the right to ask any question, but wait for your turn. See, if you have doubt and you don't keep your doubts here, then I would call you duffer. The GDP of that country. Just भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है. तूने गमले में लगा लिया एलोवेरा तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी. Yes, please. Who else is asking? Anything left in question? Consumer means who consumes. Buyer is one who buys. Both are different. If I reproduce that thing in production process, if I use it, it is not called consuming it. It's called using it in the production process. Consumer is the last person who consumes it, and he will not sell it further. If you are selling it further, it means you are not a consumer. You are a producer only. Your final goods can be intermediate goods for me. So you are also in the chain. So I will not call you, even if you are saying it's a final good. Suppose JK Tire Company is making tires. So they have to make 2 types of bills. One, the tires which are sold to consumers whose tires get burst and they replace it. And 2, the cars are sold with tires, not without tires. So JK sells a lot of tires to Maruti, Hyundai, Honda. So it is not the tire which is GDP. Then car will be GDP. Because car includes tire. Car includes engine. Car includes 5,000 components. Double counting ये तो बताया मैंने. So that is why if you find the GVA method, it is better. There will be no problem of double counting. Because JK will say, I purchased rubber, I converted it into tire, this is my value add. Maruti will say, I purchased tire and so many other things, and I converted it into car. So there will be no issue of intermediate goods, there is no issue of final goods. So that is why this method is better. This is my next paragraph, by the way. Please write. Value added method, please write. Value added method is better than production method because it is more detailed. Because it is more detailed. And without having the problem of double counting. Full stop. Moreover, it is internationally followed. Which India has also adopted. Full stop. But it requires internationally followed. Which India has also adopted. Full stop. But it requires the addition of net product taxes. Net product taxes to find the value of GDP. Net product taxes to find the value of GDP at market price. Full stop. Market price is the price
full stop. Market price is the price which the customer pays, inclusive of taxes, full stop. Market price is the price which a customer pays, inclusive of taxes like GST. However, basic price is the net price which goes to the seller after depositing, is the net price which goes to the seller after depositing the product taxes and adding product subsidies to the market price. To the market price. Next, and adding product subsidies to the market price. Next paragraph. At present, GDP is valued to the market price. Next paragraph. At present, GDP is valued at market price. At market price. Paragraph. At present, GDP is valued at market price. However, GVA is valued at basic price. So suppose you are purchasing any product from market, GST is always a part of it. In your coaching, suppose your fee charged by Drishti is 1 lakh, they will charge you 1,18,000 rupees. Drishti will get the basic price, 18,000 will go to government. So this 18,000 is your GST or product tax, because there is no subsidy on coachings. So subsidy has to be subtracted. So minus minus will become plus. So there are two formulas. One method is this, where you have to subtract the tax and add the subsidy. The other formula can be market price minus product tax minus subsidies is equal to. So these are the three ways to represent it. When you open this bracket, minus and minus minus, so UPSC can ask you this question in preliminary exam. If there is a product of 100 rupees, GST is 10 rupees, subsidy is 2 rupees, how much is the basic price? ठीक है, तो क्या करेंगे? First method is basic price minus this plus this. So 100 minus plus तो आ गया. दूसरा method, you take this net. Net product tax का मतलब 10 minus 2 is net 8. Government is taking 10 rupees, giving 2 rupees back to somebody, not to the same person. Government is taking GST from rich people and giving subsidy to poor people. Reliance से वो GST लेंगे, लिखना नहीं है. Reliance से GST लेंगे, खादी वालों को सब्सिडी देंगे. तो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स है? बिकॉज जीडीपी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, so we have to do it nationally. National income is national, not personal.
It's not a microeconomic variable. So you have to think for the whole nation. I'm just for the sake of convenience, I'm giving you this example, but this is not the right method of doing it. We are saying ABC. The GDP is not just ABC. GBC is 143 crore people. क्या बनाया, क्या sell किया, वो निकालना पड़ेगा. But that I cannot demonstrate on the board. So keep micro example in mind, but macro situation. Example एक ही point का है. But same way you have to treat every product. So UPSC can ask you a micro level question or a macro level question. Macro में क्या होगा? They'll say GV of a country is 250 trillion rupees. Total GST is 10 trillion rupees. Total subsidy grant is 1 trillion rupees. बताइए अब GDP कितना होगा? So from this to that side, if you have to go, your signs will be opposite. GVA plus net indirect taxes will be equal to. You get my point? GVA plus net product taxes is equal to GDP. And suppose GDP is given. So we'll say GDP minus net product tax is equal to GVA. So anyway, they can ask you a preliminary question, giving you some data, numbers may be de sakte hain, or they can ask you the formulas, which of the following is the right formula for GVA. So they will just change plus minus and give you 4 options. So these are the questions. To go. Your signs will be opposite. GVA plus net indirect taxes will be equal to. You get my point? GVA plus net product taxes is equal to GDP. And suppose GDP is given. So we'll say GDP minus net product tax is equal to GVA. So anyway, they can ask you a preliminary question. Giving you some data, numbers may be de sakte hain, or they can ask you the formulas, which of the following is the right formula for GVA. So they will just change plus minus and give you 4 options. So these are the questions that they have asked in the past. But they are very easy questions if you know the concept. Is it okay? So let me make very clear that when only GVA word is written, then it will be always the basic value which goes to the seller. And when GDP is given, it will be always the value which customer is paying. Market price is customer paying. And customer is paying for the seller and for the government also. Customer actually is not an English word. Customer is a Sanskrit word. 2 वर्ड से बना हुआ है, कष्ट और मर. संधि विच्छेद हो गया ना, तो सारा कष्ट किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को शर्म भी नहीं आती है 18% जीएसटी लेते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जबकि कोचिंग बच्चों को देनी है. हमारे पे थोड़ी लग रहा है, बच्चों पे लग रहा है. टैक्स हमारे ऊपर लगना चाहिए, टीचर्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए. टीचर्स आर प्रोड्यूसर्स, स्टूडेंट्स आर कंज्यूमर्स, एंड दे आर नॉट गिविंग गुड education in their schools and colleges. That is why you have coaching institutions. It's a parallel economy, not informal for me, but it is a parallel economy in that sense. You get my point? So if suppose schools and colleges become better, no requirement of coaching. I hope you get my point. So in developed countries, your school system, college system is very refined, and teachers are always available to help. So coaching का कोई वो नहीं है. In developing countries, poor economy where people have little income, they have to spend a lot on coachings, and then government will add 18%. 2% लगा लो भाई, 5% लगा लो, 18% कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, it's too much. And I'm telling it from your side because any money you give me for GST, I have to deposit. It's not going to my pocket. I get basic price. I hope you get my point. तो जो भी पैसा आप देते हो, उसका almost 1/6 गवर्नमेंट को जा रहा है. So we said rent, wages, interest and profit. Now एक और चीज हो गया,
that is GST. Market value will be inclusive of GST. Is it okay? So please try to understand, and for this matter, you have to read notes at least twice. And suppose you don't understand by 2 readings, so make them 4 readings, 2 today, 2 tomorrow. But इससे आसान पढ़ा सकता हूँ, ये चैलेंज है मेरा. कोई बुक्स में से पढ़ लोगे, इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज नहीं मिलेगा. फिर आई एम देयर टू सपोर्ट यू. ठीक है, डोंट एक्सप्लॉइट मी, बट यू कैन आस्क मी. राइट नाउ तो यू आर एक्सप्लॉइटिंग मी. बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड एंड टू आस्क क्वेश्चन इज ऑलवेज गिविंग योरसेल्फ टाइम. तो अब आज से क्या करेंगे? आज क्लास होगा डाउट कल होगा, which I told you in the first session. A doubt session is always 15 minutes of the next class, not today. So don't interrupt in the middle. For any short thing where clarification is needed, I'll take. Long questions I'll take tomorrow, because you have to struggle at home first of all to read all this. 99% of your problems get solved if you read my notes very carefully, because at the time of writing sometimes you're not attentive. That's why you don't understand. You're not listening to me properly, just writing without understanding. ठीक है? अगर मैं किसी सेंटेंस में बोलते बोलते ऐसे बोल दूं hence I am a donkey, तो आप लिख देंगे I am a donkey. ठीक हो गया, फ्लो में चल रहा है, वो सुन रहे, लिख रहे, सुन रहे. ऐसा मैं कहूँ तो करके दिखा दूंगी. घर जाके देखेंगे भाई ये क्या लिखवा रही है सर. तो प्लीज आई डोंट वांट यू टू बी डोंकीज. ठीक है, क्योंकि डोंकी नाराज हो जाएंगे. ठीक है, तो मजाक के लिए कुछ भी बोलते हैं, आप दिल पे तो नहीं ले लेते ना इसको. ठीक है, मैं आपको अगर नालायक बोल रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ लायक, ना तो किसी और के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है, 2 वर्ड्स है ना. ओके, संधि विच्छेद. ऑन दिस मार्केट प्राइस एंड बेसिक प्राइस 100 + 18 फॉर्मूला विद 0 सब्सिडी, ये सबसे स्टैंडर्ड है, पहले ये समझ लो. Basic price is what goes to seller. Market price is what customer is paying. Difference goes to government. Is it clear? So when I said 118 is market price and 100 is basic price. So this is the base of GVA formula with 0 subsidy. ये सबसे standard है, पहले ये समझ लो. Basic price is what goes to seller. Market price is what customer is paying. Difference goes to government. Is it clear? So when I said 118 is market price and 100 is basic price. So this is the base of GVA and this is the base of. That is why GDP will be always more than if there are taxes. But suppose government is giving more of subsidies, then उल्टा हो जाएगा. Suppose subsidies are more than taxes. So then GVA will move more. Like खादी का कपड़ा 300 रुपए मीटर आता है, लेकिन गवर्नमेंट 100 रुपए सब्सिडी दे देती है तो वो 200 का बेच देते हैं. तो मार्केट प्राइस इज लेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूज. Without subsidy, khadi cannot compete with polyester and nylon because they are made with plastic. Khadi is made with cotton and silk. They have a high cost, input cost, and their process is also very time consuming. Labor cost is more. So on some product there is subsidy, on some product there is GST, but you have to do it macro. So at the end, you have to do figures in lakhs and crores of rupees. Now you can ask questions. Ask me anything. Yes, tax बढ़ा दो, GDP बढ़ जाएगा. सही कह रहा है तू. NCERT पढ़ के आइए. फैक्टर प्राइस कहां से आ गया? फैक्टर प्राइस कहां से है? मैंने कहीं कोई वर्ड बोला फैक्टर प्राइस? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड. फैक्टर कॉस्ट कौन बोला? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड. आस्क मी एनीथिंग जो मैं बता रहा हूं. फैक्टर कॉस्ट का कांसेप्ट को आउटडेट हुए 8 साल हो चुके हैं. नो, पहले इस बात को क्लियर कर दें, फिर आपके क्वेश्चन पर आते हैं. देयर आर 3 थिंग्स. I just gave you example. ठीक है? What did I subtract? And there can be multiple taxes also. अभी तो GST है. Before GST, how many taxes were there? There were 8 central taxes and 9 state taxes. 17 taxes गवर्नमेंट ने हटाए हैं तो GST आया. और उसके अलावा 11 तरह की सरचार्जेस भी हटाए. तो 30 टैक्सेस गए तो GST आया. तो वो सारे आते पहले. अभी एक और चीज. There are some more taxes which are known as production taxes. So this was the system earlier. Up to 2015, we were calculating factor cost. After 2015, we have started using basic price. This method is outdated. Government is not publishing it anymore. UPSC will never ask question on factor cost, but it is given in NCERT book. It is given in every book. Even in Drishti book, it is mentioned. But outdated है, खत्म हो गया ये चैप्टर क्लोज. कोई चीज सरकार ने बंद कर दिया तो उसको पढ़ाना जरूरी है क्या? नहीं सर, फिर भी पढ़ाओ. अबे मैं तो पढ़ा दूंगा, तुम पढ़ के क्या करोगे? क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? चलो लिखो, फिर कर लो. फिर मैं तुम्हें 1947 से पढ़ाता हूँ. नहीं, फिर मैं सब पढ़ाऊंगा आपको और क्लास चलेगी 5 साल. मैं पढ़ाता रहूंगा बस. और फिर वहां से क्यों पढ़ाऊं? फिर अंग्रेजों से पहले भी पढ़ाना पूछ लिया तो. अरे सर कौटिल्य अर्थशास्त्र पूछ लिया तो वो भी पढ़ाऊंगा फिर.
फिर चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करते हैं क्लास। यूपीएससी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि 2 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछ ले। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से आते हैं। सपोज यू हैव एग्जाम इन 2026, तो मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन 2025 एंड 26 करंट अफेयर्स। तो conceptually you build yourself, but at the end suppose in 25 they change the method again, they introduce another price, तो फिर वो आएगा एग्जाम में, ये नहीं आएगा। 99% ऐसे ही होता है। 1% तुम्हारा दुर्भाग्य है, मैं क्या नहीं सकता। Because this change of methodology also was changed in 2015, but they asked it in 2020। 5 साल के बाद उनको याद आया भाई ये तो पूछना ही भूल गए थे। Because in this chapter there are very limited questions for mains examination. This chapter is good for pre, but if they want to ask something for mains exam, they can ask it from the current affair। current affair कुछ होता ही नहीं है इसमें, except the data on GDP and national income। data पे they don't ask questions। So they said when the method was changed 2015, what were the changes? This was asked 5 years later। हो सकता है, but factor cost तो उससे भी पुरानी चीज होगी ना। Anyway, so I'm just telling you, write down the next paragraph। At present, the concepts of market price and basic price are in use। Just telling you, write down the next paragraph। At present, the concepts of market price and basic price are in use by Ministry of Statistics, are in use by Ministry of Statistics and Program Implementation, write down the next paragraph। At present, the concepts of market price and basic price are in use by Ministry of Statistics, are in use by Ministry of Statistics and Program Implementation, although in the earlier methodology, Ministry of Statistics and Program Implementation are in use by Ministry of Statistics and Program Implementation, although in the earlier methodology, national income was valued at factor cost and GDP at market price, was valued at factor cost and GDP at market price. Next paragraph, factor cost can be calculated by subtracting net production taxes from the basic price. Full stop. Production taxes are those subtracting net production taxes from the basic price. Full stop. Production taxes are those indirect taxes on producers and sellers which are charged on time basis, like yearly,
instead of charging on the basis of number of units produced. What is the tax? You all know what is the tax? Something which we don't want to give, but government wants to charge. So taxes are of two types. Some taxes are charged directly from customers without involving anybody. So if you are a customer, you have to pay it directly to government. For example, income tax. You pay directly to government. But in indirect taxes, customer has to give it to firms, and firms have a liability to pay it to government. Ultimately, customer कौन है? Customer कौन है? But you pay it through. So you have given it to Drishti, and Drishti gave it to. So it's indirectly given. Difference is clear? So generally हम क्या बोलेंगे? Taxes on income are direct, and taxes on goods and services are indirect. Generally, any doubt? फिर हमारे पास एक पूरा chapter है on taxation. We'll discuss this again in detail. Now, indirect taxes are of two types. Some are called product taxes, which are charged on the product itself on per unit basis. Per unit मतलब if you produce one glass, you have to pay it. If you make per bag, per mobile phone, per pen, कुछ भी बना रहे हो हर unit पर. Some taxes are charged on production capacity, like factory license fee per annum. Per year. So you make one glass or you make 1 million glasses. आपको 50,000 रुपए सरकार को पोल्यूशन टैक्स देना है. जैसे आप पासपोर्ट फी देते हो, विदेश जाओ या ना जाओ, पासपोर्ट का पैसा तो लगेगा, बट वीजा भी हर विजिट पे लगेगा. तो दोनों में फर्क है. पासपोर्ट फी टाइम बेस पे लगता है, वीजा हर विजिट पे लगता है. तो दृष्टि के ऊपर एक तो टैक्स है जो पर स्टूडेंट देना है, जीएसटी, और एक एनुअल टैक्स है जस्ट लाइक रेंट जो म्युनिसिपैलिटी लेती है. तो वो तो देना ही. एक स्टूडेंट है या 1 लाख है या कोरोना हो या लॉकडाउन हो, वो तो लगता ही है. जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, यू लिव इन द प्रॉपर्टी, यू गिव इट ऑन रेंट, तो देना ही पड़ेगा. यूज है या नहीं है, डजंट मैटर. यू हैव अ प्रॉपर्टी, यू हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स. So this is international classification. इंडिया में ये पॉपुलर नहीं, बट इंडिया हैज फॉलोड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, SNA बोलते हैं उसको. And after following this system of national accounts of United Nations, this all have been taken, but NCRTs are not updated. Books in market have mixed up old concept and new concept. Ultimately, what are the concepts? They don't know. मैं क्या करता हूँ, whatever is outdated मैं उसको नोट से भगा देता हूँ. आपने पूछा तो मैंने पढ़ा दिया. ये पूछ लिया तो मैं क्यों पाप लूंगा आपके? समझ गए? मैं तो रिस्क ले सकता हूँ. मुझे ऐसा लगता है 90%, 99% एनी समझदार टीचर विल नॉट आस्क इट. आउटडेटेड कॉन्सेप्ट क्या करोगे? See, when factor cost is gone and basic price has come and basic price has not been asked, what is more relevant for examination? Obviously, basic price. I hope it is clear to all of you. The kind of pattern that you have in exam, it's like that. But if they ask any old thing, it's your bad luck only. But that will happen only for a question or two. That's it. Majority of your paper will be very, very online type. जो चल रहा है उसी में. Anyway, are you clear with the two? Now, suppose I make another chart here. Okay, market price of any product is 118 rupees. Same example. You divide it into two parts. What are the two parts? Basic price 100 and product tax 18. This was clear? The difference in these two is clear? Now this can be broken further if you go in the history. That some part of this is factor cost. Say 99 rupees. If 1 rupee I assume is average production tax per unit. Suppose I have paid factory license fee kitna, I have paid for this building 50,000 rupees to government as property tax, and I have taught 50,000 students. So for every student I paid 1 rupee. Average तो आ ही जाएगा ना. So this average you can subtract here. Average per unit, I am assuming it. Why I am assuming? Because it is paid annually. But I have to calculate it for my product. GDP is product, not year. That's why. So I will just for the sake of interpreting it. हालांकि government ऐसा कुछ कर नहीं रही है. Now the calculation just stops here. That's it. But this only for you. Those who are interested in factor cost concept. अगर आप नहीं करना चाहते तो इस पार्ट को आप ड्रॉ मत कीजिए. Simple. This is your choice. You want to learn it or not? This is optional, not optional subject. But this is optional learning. Huh? Now you ask me any question, I can answer it. Experts, make something. हाँ बेटा होने वाला है बहुत जल्दी. मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, पहला काम ही करूंगा.
नहीं, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया थोड़ा क्रांतिकारी है। सपोज आप लोग मुझे वोट देते रहे, तो भाई इंडिया में तो कोई भी बन सकता है। और अब तो क्या हो रहा है कि जो बिगड़े हुए बच्चे वही नहीं बन रहे, बस जिनके माँ बाप पॉलिटिशियन रहे हैं उनका नंबर नहीं आया, कोई सन्यासी बन रहा है, कोई चाय वाला बन रहा है, कोई भी बन रहा है, तो मेरा भी चांस हो सकता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने लोग बनते थे वो ज्यादातर टीचर्स होते। हिस्ट्री विल रिपीट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, तो हम तो उनका एक इनका भी नहीं है बेसिकली नॉलेज में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन used to speak 17 languages and write 17 languages without referring to any book. कहाँ वो, कहाँ हम लोग कलयुग के टीचर्स हैं, तो वो तो सतयुग वाले हो गए। वो लोग प्राइम मिनिस्टर बनते थे, प्रेसिडेंट बनते थे। तो हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत सुंदर थी। ये तो गंदी पॉलिटिक्स जब से स्टार्ट हुआ ना, फैमिली पॉलिटिक्स आ गई, नॉन डिजर्विंग पीपल को हमने बनाना शुरू कर दिया, वोट बैंक बनाने शुरू कर दिए, डिवाइड करना शुरू कर दिया अंग्रेजों की तरह। नहीं बेटे, सबको तो अच्छे नहीं लग रहे, नहीं तो सारे ऑपोजिशन वाले इसी में मर्ज क्यों नहीं हो जाते? अगर अच्छे हैं तो एक ही पार्टी बन जाएगी, चाइना की तरह डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, इलेक्शन ही नहीं कराने पड़ेंगे अगले 2047 तक। उसका भी कॉस्ट डेवलपमेंट में लगा देंगे। भाई जो लोग कहते हैं स्कूल कॉलेज खुलवा दो सब जगह, तो उनको बोलो इलेक्शन ही मत करो 47 तक, वो सारा इलेक्शन का पैसा ही लगा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो पॉलिटिक्स सबको करनी है, बेरोजगार बच्चे हर घर में, नेताओं को भी अपने बच्चे सेट करने हैं, और वो तो कुछ और आता भी नहीं उनको। और अनपढ़ आदमी दो ही काम कर सकता है, खेती बाड़ी या पॉलिटिक्स, बाकी सबके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पॉइंट है कि अगर मैं बन जाता हूँ वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इनकम टैक्स जीएसटी खत्म, क्या करना है कि, और नोट खत्म, नोट जीरो, 100 रुपए तक के नोट रखूंगा बस, 200 का बंद, 500 का बंद। नोट का कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल में सब नोट है आपके, डिजिटल ट्रांसफर करो, यूपीआई करो, यूपीआई कंपलसरी। 1 रुपया देना है तो भी यूपीआई, 1 करोड़ देना है तो भी यूपीआई। ठीक है, नोट खत्म, कैशलेस सोसाइटी। मोबाइल सबके पास होगा, जनधन अकाउंट सबके पास होगा, यूपीआई सबके पास होगा। आई द टाइम जब तक मैं बनूंगा, 2047 के बाद ही बनूंगा, तब तक के लिए तो फिक्स है। तो मैं 48 की बात कर रहा हूँ, 43 तक तो यही रहेंगे, इनको काफी अच्छे लगते हैं तो ये वोट देती रहेंगे उनको। तो और 5-7 साल में, 10 साल में क्या होगा? वी विल बी टोटली डिजिटलाइज्ड। जैसे अब जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, जो लोग चाय बेच रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग यूपीआई पेमेंट्स। तो व्हेन दे हैव स्टार्टेड, इट मींस विलेजेस आल्सो विल आल्सो स्टार्ट, बिकॉज़ इट इज वेरी कन्वीनिएंट। किसी को 17 रुपए 90 पैसे देने हैं, तो फिर उसको 20 रुपए क्यों देंगे हम? अभी तो किसी को 17 रुपए 90 पैसे देने हैं आपको, 20 रुपए दो के का नहीं है, आप 17-90 दे दो मुझे, तेरी ऐसी तैसी, पकड़ यूपीआई। हम अपना 2 रुपए 10 पैसा बचाएंगे ना। यू गेट माय पॉइंट? तो लोगों को भी फायदा होगा। नाउ एवरी पेमेंट दैट इज गॉन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, कोई भी पेमेंट जो 100 रुपए से ऊपर की होगी, जो डिजिटली कंपलसरी है 100 रुपए से, उसके ऊपर क्या होगा? एक 0.1% मैं डिजिटल टैक्स लूंगा, और वो बैंक लेगा फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, और वो उसी समय कटेगा एज कन्वीनियंस। वो सीधा सरकार के खाते में जाएगा, और बैंक एक गवर्नमेंट का अकाउंट में। यू गेट माय पॉइंट? तो 1000 रुपए पे अगर आपको 1 रुपया देना है तो दोगे या नहीं दोगे? 0.1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब होता है 100 पे 1, 0.1 का मतलब 1000 पे 1। तो अगर आपने 10,000 रुपए भेजे अपने किसी दोस्त को, 10 रुपए लग गए तो क्या दिक्कत? 1 लाख भेजे, 100 रुपए लग गए तो क्या दिक्कत? क्या होगा? हर ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स सरकार को चला जाए, किसी और चीज के टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। यू गेट माय पॉइंट? दिस इज हाउ वी कैन एबॉलिश टैक्स फ्रॉम एनी कंट्री। बाकी मेरा क्रांतिकारी विचार है, आपको अच्छा लगे फॉलो कीजिए, नहीं तो एग्जाम में मत लिख देना। ठीक है, अभी मेरे और आपके बीच में है, क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद आएगा तो भयंकर पसंद आएगा, और कोई ऐसा होगा जो कन्वेंशनल चीजों को ही फॉलो करता है। सम पीपल आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज। नो पैरेलल इकोनॉमी, एवरीथिंग विल बी व्हाइट, नथिंग ब्लैक, ओनली फिर होगा लीगल मनी, इलीगल मनी। एंड नाउ जो ड्रग्स वाले लोग हैं, किसी ने वो पुड़िया बेची, क्या कहते हैं उसको, पुड़िया होती है ना, अब आप या तो उसको 100 के नोट दो, अब कोई 10,000 20,000 की ड्रग्स खरीदता है, तो उसके पास करेंसी कहाँ से आएगी? करेंसी बहुत भारी हो जाएगी ना उठानी, कि आप एक बड़ा सा बोरी में सिक्के लेके आओगे, लो भैया 10,000 के सिक्के गिन लो बैठ के, तब तक पुलिस ही आ जाएगी। तो सिनेमा स्टार जो थे हमारे, जो बड़े बड़े सिनेमा स्टार है, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, नाम लेके बताऊं क्या? तो हटना पड़ता है यार यहाँ से। वो सब लोग उसमें कोरोना में ड्रग्स खरीद रहे थे, क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारे बॉलीवुड के लोग हैं वो, ठीक है, और बिकॉज लॉकडाउन था तो ड्रग वाले पार्सल बना के भेज देते थे, पोस्ट वाली सर्विस चल रही थी, कुछ दवाई वाली सर्विस चल रही थी, मेडिकल वाले पार्सल चल रहे थे, तो उसमें छुपा छुपा के, और पैसा यूपीआई से जा रहा था, व्हाट्सएप से जा रहा था। तो बाद में जब वो रैकेट्स पकड़े गए तो गवर्नमेंट ने ये देखा, अबे ये तो फिल्म स्टार का व्हाट्सएप नंबर, ये भी यही है। तो लॉट ऑफ पीपल गॉट caught in that, and good names, I don't want to tell you them. So problem is that crime will go down, because big payments you will not have cash to pay, you will do digitally तो फिर they will be a record, and record मतलब anybody can trace you in the long run. तो अभी क्या है कि CBDC has been launched, मेरे पास तो मेरे अकाउंट में CBDC पड़ा हुआ है, I have account with Yes Bank। तो जब CBDC आया था उन्होंने तभी मेरे को भेज दिया था कि आप CBDC ज्वाइन कर लो हमारा, तो उसका एक अलग ऐप है, उसमें हमें किसी को भी पैसा भेज सकता हूँ, नॉट इवन यूपीआई, इन यूपीआई ऑल्सो देयर इज अ प्रोसेस, CBDC जस्ट पर्सन टू पर्सन।
अभी पढ़ेंगे बाद में तो बताएंगे आप, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, ई रूपी जिसको बोलते हैं। एनीवे अभी फिलहाल डिस्कशन ये है, लेट मी कंप्लीट दिस बिफोर यू आस्क मी मोर क्वेश्चंस। आर यू क्लियर विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? क्यों इसको डायरेक्ट बोलते हैं, क्यों इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं? क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ टू टाइप्स। So in the NCERT book, what they say is market price minus total indirect taxes is equal to factor cost. तब ये नहीं था. So this plus this is indirect tax. So you subtract 18, you subtract 119, you get directly 99. There was no stock over at 100 ना in the earlier method. तो पुराना फॉर्मूला जो आपने किताबों में पढ़ा है वो ये है. Factor cost is equal to market price minus net indirect taxes. Because this chart was not there. It was only up to this point. So 18 rupees and 1 rupee. Total 19 rupees is in my example. Any question now? आपने लिख भी लिया इसको, बात तो ऑब्वियस ही बात तो सेम ही है, बट हम ये अब यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वी आर नॉट फॉलोइंग फैक्टर कॉस्ट मेथड एनीमोर। इज इट ओके? नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ एक लाइन और लिख लो। इन द अर्लियर मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, factor cost was computed as market price minus net indirect taxes. Market was computed as market price minus net indirect taxes. Market price minus net indirect taxes, because there was no distinction of product and production taxes. Write down a question here of product and production taxes. Write down a question here. Distinction of product taxes and production taxes. दोनों के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं था पहले. Use your red pen for writing question, please. Explain the difference between computing methodology of India's GDP before and after 2015. Explain the difference between computing methodology of India's GDP before and after 2015. मैंने आपसे बोला था जब भी मैं ईयर बोलूंगा तो आपको ईयर लिखना पड़ेगा, आपने नहीं लिखा तो इस पे पेनल्टी लगेगी आगे से. Whenever I speak some year, you have to write YEAR and then you write 2015. Is it okay? It's a practice that you have to follow. I will not speak year. You have to write. Explain the distinction between difference between computing methodology of India's GDP before and after 2015 year. That's it. इसमें क्वेश्चन क्या है? You have to go to PYQ book. It is answered in 2021 exam. This question was asked in 2021. 20 और 21 दो क्वेश्चन आए थे. One was on potential GDP in 2020. वो अभी हम बाद में करेंगे. Now ask me anything and make this chart if you want. This and this. This chart is very important for you. Without this, you will not understand that. So first you make this.
Product tax is per unit, production tax is per annum. PA is not personal assistant. And here you have to write, for example. This is the example of the same thing. My creative students can ask question in between. Any question? Sure? Yes? Beta, indirect tax is production tax plus product tax. Look at that. Indirect tax can be of 20 types. Product tax हर यूनिट पे लगेगा. Production tax producer पे लगेगा. Irrespective of production, you charge it from producer. Look at the notes. What have you written about it? Can you read that line? दिखाओ एक मिनट. Product and production tax. Last वाला बताना यार, कहाँ गया? Product and production tax. Last line I said production taxes, not factors. Production taxes are those indirect taxes on producers and sellers which are charged on time basis, like yearly. Is it okay? And when I'm giving you example, direct taxes में income tax भी होगा and others भी होंगे. And here income tax is not usable because we are discussing production, not income. National income use कर रहा होता तो वो use करता मैं. Right now we are doing production. So in production we don't need. So this is not taken anywhere. Similarly, in indirect tax, you have studied product tax, production tax, but there are other indirect taxes also. There are so many others, like state VAT on petrol, union excise duty on petrol. There are so many. We have not discussed it. अभी हम यहाँ discuss नहीं कर रहे, हम सिर्फ GST के example के लिए discuss कर रहे हैं. So try to just learn product versus production. That's it. More you will get in taxation chapter. Abhi you need only one concept: product versus production. That's it. Basic price is what goes to the seller. I said. Remember, मैंने क्या बोला? Concept याद नहीं रहे तो example याद रखो. You have paid how much to Drishti? 1,18,000 you paid. Example के लिए बोल रहा हूँ यार, emotional क्यों हो जाते हो तुम नालायक? Now 1 lakh rupees goes to Drishti and 18,000 rupees goes to government as. So this 1 lakh rupee is BP. BP क्या? बिहार प्रदेश? नहीं. मध्य प्रदेश? नहीं. MP is market price. BP is blood pressure. Blood pressure भी हो सकता. Now, out of this particular topic, only this much is required for examination. Rest is all waste of time. बोगस बकवास. आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद. इसके अलावा मेरे हिसाब से वो नहीं पूछे. कोई पूछे तो पूछने वाला बेवकूफ है. कोई मतलब नहीं है उस बात को पूछने का जो हम विड्रॉ कर चुके हैं. नया चीज पूछना चाहिए जिस पे आज चर्चा हो रही है. इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देयर इज नो मेंशन ऑफ फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. All my discussion is based on this document. Who calculates or estimates national income in India? Answer is who estimates GDP? It can be NSO. अब बुक्स में लिखा है CSO. बुक में लिखा है CSO. यहाँ क्या लिखा है? मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं CSO क्यों पढ़ाऊंगा? सर फिर भी बताओ CSO क्या था? अबे क्यों बताऊं? खत्म हो गया वो काम. CSO has been merged under NSO. Earlier they were different, now they are merged. So one institution is called, and it is under Ministry of. So one option can be ministry, the other option can be the department under the ministry. दोनों में से जो आइटिक मार दो. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन है कि GDP is calculated annually, quarterly, biannually.
मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली 2 बार निकालते हैं। तो ए बी ऑप्शन जिसमें आए वो टिक करो। ऐसे करके क्वेश्चंस, तो वी कैन मेक 100 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डायग्राम जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि NSO has released this press note both at constant price and current price. This will be my class tomorrow. Quarterly and half yearly भी लिखा है देखो। All of the above हो गया आंसर। I mean small but they can make questions. They estimate quarterly, they estimate half yearly, they estimate। अब देखिए they estimate GVA at MP तो नहीं लिखा है। GVA किस पे वैल्यू होता है, क्लास में लिखा है आपके। GVA is valued at, एक सेकंड में आंसर आता है। और GDP किस पे निकालते हैं, आगे लिखा हुआ है अभी मैं आई एम कमिंग टू दैट। GDP is valued at current market price and also constant market price। मार्केट प्राइस भी दो होता है, we'll discuss it tomorrow। Total tax revenue used for GDP includes non-GST as well as GST। तो डिस्कशन इज बेस्ड ऑन GST नॉन GST, और तो कुछ नहीं डिस्कस हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट कहीं बोला उसने, नो वे। हम भी क्या करेंगे, एंड दिस इज ऑल द डेटा इन द टेबल। हाउ मेनी सेक्टर्स आपने बताया था, हर सेक्टर में कितना GDP है, कितना ग्रोथ रेट है। माय जॉब इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट, नथिंग बियॉन्ड दिस UPSC will have, this is guaranteed, because UPSC will not make question paper from NCERT books। UPSC people will make question paper from government publications, very simple, which can be tested and verified। NCERT में ये तो मिस्टेक भी हो सकता है। UPSC never takes NCERT as the basis। आई होप यू गेट माय पॉइंट। और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा और उनके सोर्स भी दिखा दूंगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन बताऊंगा, बोलूंगा यहाँ से पूछा, देखो ये रिपोर्ट था, दोनों आमने सामने खोल के दिखा दूंगा। एंड नेवर आई हैव फाउंड एनी क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम द बुक व्हिच यू वर कैरिंग यस्टरडे। मैंने बोला ना, कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल होगी इकोनॉमी की, 10 किताबें हैं, सब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना क्या है, क्लास नोट्स, OG, CN, US, शॉर्टकट, किसी को समझ में भी नहीं आया। और कहां से नोट्स बनाने, मैं तो यहां से बना रहा हूं। Before teaching this in 2015 I had this dilemma because I had a different knowledge that time। बेसिक प्राइस मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने कहा भाई ये क्या आ गया। I download it every month, जो नए नए डाटा आते हैं, तो I keep on tracking what changes are made। तो I saw भाई ये क्या कर दिया, बेसिक प्राइस, तो फंस गया। आज तो पढ़ाना ही है। तो फिर 15 मिनट बैठा, उसको एनालाइज किया कि what did they change। तो they had just one, and then fortunately Ministry even published a document on the methodology। I downloaded at PDF, एक छोटा सा PDF उन्होंने 248 पेज का डाउनलोड भी कर दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि व्हाट इज न्यू मेथड, व्हाई वी आर चेंजिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स, सब लिखा हुआ था उसमें। आपको पढ़ना है तो मैं दे दूंगा, 250 पेज ही तो है, अब मुझे तो पढ़ना पड़ा वो। बट फ्रॉम दैट आई मेड हाफ अ पेज ऑफ नोट्स इन द चार्ट फॉर्म एंड माय स्टूडेंट्स वर हैप्पी, फिनिश। उसके बाद कभी पढ़ना ही नहीं पड़ा। इन 2014 की बात कर रहा हूं मैं, जब बिफोर रिलीजिंग दैट दे डिस्कस्ड इट इन अ PDF। इट वाज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, अभी भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा वो। चेंज इन मेथोडोलॉजी, दे सेड दैट वी आर गोइंग टू चेंज लाइक दिस। So it takes only 10 minutes to understand if you have confidence on this। This is expenditure method, this is GVA method। I said we have shifted to GVA, they are not calculating GDP, they are calculating GVA first। After GVA they calculate GDP and national income both। So in the next pages they calculate GDP and national income, after GVA they calculate। So all this is published every month, nothing useful anymore। See you tomorrow, stay blessed, time flies in your class। Neelam Thakur is asking, if a buyer pays GST to the government directly, will it be still considered as indirect tax? Indirect tax? तो नीलम कहाँ है? Neelom, yeah, I'm sorry. Unique name, huh? So Neelom, tell me, how can you pay GST directly to government? Okay. So that's a special technique which is used if you are, one person is GST registered, the other person is not GST registered. But in RCM, also, because I am not registered, so they are already registered. They are also. so then why do you need RCM? So in RCM, we don't have to GST directly to the, we don't have to split GST to the government.
The students who are in self-based GST, if they submit GST to the government directly, they don't pay GST. You're purchasing from them or you're selling to They them? are selling to somebody's. Okay. So it's an indirect route. So it's still called indirect tax. And GST law is mentioned under indirect taxes. Central Board of Indirect Taxes. That's why. Any other questions, please? That's great. You don't have question. I was looking for you there. Because I submit the question, then I receive some technical fault. Uh, But you have instrument to overcome. See, first of all, there is no standard thing that I can tell you. Conclusion would be depending upon the type of question. Suppose you have to tell what government initiatives have been taken in the past. So, in conclusion, you can say that it's not that the initiative that is important, its implementation should be taken care of. So, you can suggest a good implementation for any question where body of the question is government policy. That's a good mark. 35% is good to start with because toppers get 50%. So if you are getting 2 marks, then it is bad. 3 is average. 3.5 is average. 4, 5, 4.5, 5.5, the very good marks. 5.1 to topper ke marks are 51%. So 35% is a good score. Don't compare it with your school level performance, my dear. If you are getting more than 3 marks in your evaluations, it's a good score. Don't be disheartened. And you have just started your journey. Don't be overexcited. Huh? But I promise you that after 25 answers that you write, you will almost get 50% in every question, mostly. So this is one conclusion. Second conclusion is suppose they want your suggestions, then conclusion cannot be this. You cannot say that my approach should be implemented properly. So then conclusion should be writing a hope that from these suggestions, if implemented thoroughly, we can hope to solve this problem. So most of the conclusions, they should end up in some positivity, as if you're going to solve the problem. Because most questions will be question based, challenge based, issue based, and you are providing a solution answer to that. One sentence. But what? No, there's nothing technical. See, in introduction, one sentence. In conclusion, one sentence. 20 words is other nahi. You have total 150 words, my dear. So if you write 50 here, what is left? तो 30 में भी ज्यादा नहीं हो रहा. 30 का ये है. Introduction is 30 words. Your body is only 90 words. तो फिर वो कहेगा लिखा कुछ नहीं है आपने. Write more on body also. Problem is that you have to balance it out. So I think best is 20, 15 to 20. One long sentence in introduction, one long sentence in conclusion, and then minimum 4 paragraphs in body. So total 6 paragraphs. Standard बनाइए इसको. Yes. So ऑप्शन से आ गया ठीक है सपोज आपने कोई ऑप्शन कर दिया कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन सपोज उसके लिए बुजुर्ग कहते हैं बादाम खाने चाहिए वो सॉल्व. मैं क्या कर सकता हूँ? My dear, if you do revisions, 5 or 6 revisions minimum before examination. Examination जब होगा आपका तब तक आप 8 revisions कर चुके होंगे शायद. तो I think that time you will not have problem of memory if you have done it so many times because you are learning.
See, first stage is that you need to read class notes to understand the things. Conceptual clarity. This requires 2 to 3 readings of the notes. First, I'm speaking in class. Then I'm dictating in class. Then I'm asking you the 3 times. So I'm doing a chapter in class only. Any topic, I'm explaining you 3 times. This is the technique. If I just keep on, dictating to you side by side, explaining it a little bit, then it will be covered only once. My technique is when I'm discussing, don't write. So when I dictate, it's another round. So we do 2 rounds. Then I say, you go home, read it. Then I say, when you come to class next, you again read it. So 4 times you are doing a topic in 24 hours. इससे ज्यादा क्या करोगे? और अगर आप इसमें बोलते memory problem है, तो it means you make it 6 times. Revision is the only solution. There is no other problem, and you will groom in the subject. It will become, a very natural thing for you after some time. Yes, sir. Perfect market B. Perfect market only is invisibly controlled, na? In perfect market, market forces are very strong. They decide most of the things. Role of government is very minimum. So it matches the concept given by Adam Smith. Automatically, this is equilibrium point. Suppose milk price is 60 rupees a liter, and somebody says, I will supply milk at 40 rupees a liter, and I will kill the others in the market. So what will happen? At 40 rupees, there will be a huge gap between demand and supply. What does it mean? That at 40 rupees, supply will be only limited. One person is supplying, others are not interested. But demand will increase because price has gone down, so demand will expand. So there will be a mismatch between demand and supply. So if there is a mismatch, what will happen? Market will correct it. Price will start moving upside automatically. Automatically is the thing that you are asking. Government will not come in this. You get my point here? So invisible hand means self-correction only, nothing else. And you said real flow is flow of product from firm to the consumer, and then consumer is paying the price to the firm, so that makes the income of the firm. So this side is basically GDP, and this side is basically national income, and mostly they go hand in hand. If GDP increases in a country, national income will also increase automatically. Interesting. And they are circular because goods are going to customer, money is coming from customer. Circular का मतलब क्या है? Circular. And we made it like this only. ये circular ही बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ? Triangular थोड़ी है यार. 2 sector हो गया ना. Producer, consumer, ये कितने sector हुए? नंबर लिख के बताता हूँ. ये 1, ये 2. 2 sector economy. Now you want 3 sector economy. तेरे दिमाग में ये चल रहा है? हो सकता है. So in 3 sector economy, there is a producer, consumer, and government. And in a 4 sector economy, there is rest of the world. Import, export also will come. Closed economy means that you don't have external sector. You have only internal sector. In closed economy, if there is no role of government, then we have only 2 sector economy. So traditionally,